इस वीडियो को देख रहे सभी साथियों एवं छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आज आपके सामने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज से मैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट AKTU के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट में पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन किया गया है, उनको बताया गया है। तो मैं आज से इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें मैं आपको क्या आप इस सब्जेक्ट के माध्यम से क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे, उसके बारे में आज आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम इससे टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। इस सब्जेक्ट को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को 5 यूनिट में बांटा गया है। देयर आर 5 यूनिट इन दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट यूनिट बिलोंग्स टू DC circuit and the second unit belongs to AC analysis, or the second unit belongs to AC circuit, and the third unit belongs to transformer. You will learn about the briefly about the transformer in this unit, and the fourth unit belongs to machine part. So here is a brief introduction of machine. We will not go in so much deep or not in a design or construction level, but we will learn the basic working principle of every machine. And the fourth part deals with the some utilization of electrical devices, as like we will cover in this 5th unit the basic element which are used in domestic wiring, as like MCB, MCCB, RCCB, and what is the cable, earthing, and so on, which are used in domestic wiring and houses. So basically there is a introduction of whole electrical engineering in this subject. So today I am giving you the introduction of every unit, that what you will learn in this whole subject. So as I have told you that the first unit deals with the DC analysis. Unit 1 actually deals with the DC circuit analysis. So in this unit we will use only a DC energy source to energize any electrical circuit, and then we will analyze the circuit to find out different parameters like voltage, current, power, energy, and so on. So first of all, we will learn that what is DC power, what is the difference between the DC and AC, and then the there is a introduction of basic element of a electrical circuit, as like what is resistance, what is inductance, and what is capacitance. These are the basic building blocks of any electrical network. So you must have knowledge about the resistance if you are going to study any electrical network, or you belong to electrical engineering or electronics engineering. Then you must have knowledge of the resistance, inductance, and capacitance. These are also the inherent property of the material. So you will learn about the resistance, inductance, and capacitance in this unit, and then you will have some knowledge about the electrical network, when any network is termed as electrical network. So electrical network, so you must have knowledge about of electrical network. So and then some property of the electrical network. You will also learn here
the property of the electrical network, how the element of the electrical network can be categorized in different categories, like the one category is given here, active and passive element. Here you can see that you have to identify the active and passive element of the network. So another category of element may be unilateral and bilateral element. There is another category of element of any electrical network, like as linear and non-linear element. Linear and non-linear element. So element of electrical network can be categorized in these categories, as like there will be some active element in the network, and there will be some passive element in the network. There may be some unilateral element and some bilateral element. Some will be linear and some will be non-linear element. So these are the property of any electrical network. So you will have knowledge of these category of electrical network, and then you will move toward the very fundamental principle of electrical engineering, as like KVL and KCL. So in this unit you will have a knowledge of KVL and KCL, as KVL stands for the Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. These are the fundamental principles which will be applied frequently in a whole electrical engineering subject as well as electrical engineering branch. These are the very fundamental part of the electrical engineering. So you must have a clear concept of these two principles. And then there are some technique to apply KVL, KCL in the circuit, which will be discussed here, as like loop and nodal method of analysis. So you will apply KVL in the circuit using mesh or loop method, or you can apply KVL in the circuit using nodal analysis. These are the method to apply KVL in the circuit. So you will have a proper knowledge of KVL, KCL after studying this unit. There are some network theorem that will be covered in this first unit. The theorems which you will learn are there. Hope so there are 3 or 4 theorem. Let me raise first. So there are the first theorem is Thevenin theorem. The second theorem is Norton theorem. So Thevenin theorem. Second is Norton theorem, which you will study Norton theorem, and then superposition theorem, and then maximum power theorem, which is not mentioned in the syllabus but is an important theorem. So we will cover this theorem in this unit, maximum power transfer theorem. And then there is another topic, that is star delta or delta star transformation. So these are the topic which you will cover in this unit. Basically we will use only DC power in this unit, while these theorem are also applicable on AC power, but here in this unit we will only use DC source for the application of these theorem.
Now come to the unit second. In a unit 2 is totally belongs to a AC source and AC circuit analysis. AC means here AC is a single phase AC. So you will learn the application of single phase AC, which we use for the domestic purpose, while the generation at the power plant is in the form of three phase, but we use a single phase for the domestic purpose. So in the second unit we will learn that how this single phase AC or the AC is generated, and then what will happen if we apply AC source in a circuit. In the first unit we saw that what if the DC source is applied in the circuit, then what is the effect of the DC source. But here in this unit, this DC source will get replaced by a AC source. AC means alternating source. So we have seen a constant source, the effect of constant source in a first unit. Then in a second unit, we will see the effect of this time varying source, whose magnitude and direction are changing with respect to time. Then what will happen if this time varying source or the periodic source is applied across the element RLC element? Then what will happen? So that will be covered in this second unit. So this second unit, first of all we will learn the generation of the single phase AC, then terminology related to the single phase AC. The terminology are the average, what is the average value of alternating current, what is the effective value or the RMS value of the alternating current, then the form factor and peak factor connected with the alternating waveform, and then what is phasor and phasor diagram. It's a very important topic that will be used frequently in solving of the AC circuit. Phasor diagram. Phasor diagram is a very important topic. You must have knowledge, clear knowledge of drawing the phasor diagram, because AC circuit are mostly solved with the help of phasor diagram. So it's very important to understand clearly phasor diagram of AC circuit. And then the second part, you can see that this is the analysis part. The second part of this unit is the analysis part. In this part you will see what will happen if the alternating source or the sinusoidal source is applied across resistance only, across inductance only, across capacitance only, and then combination of RL and C, RC, RLC. So the second part is dealing with the analysis part, in which you will calculate the power, current, power factor, all when alternating source is applied across the combination of RLC. This combination may form a series circuit, or may form a parallel circuit, or may form a series parallel circuit. So you have to apply alternating source across the combination of RLC circuit, and then you will find out the current, voltage, power factor, and so on across the element of the circuit. And then you will study about the resonance in series and parallel circuit. There is a phenomena of resonance in AC circuit. So you will learn about the resonance, what is resonance, and what is the condition of resonance, and what will happen when resonance occur in a circuit, in a series circuit and in parallel circuit. So it's a very unique phenomena of AC circuit. So we will learn about the resonance, and then in the last, as I am seeing that there is a three-phase balance circuit. So you will also learn about the three-phase generation, and what is three-phase circuit, what is three-phase load, what is three-phase power. So in the last topic or the last part of this unit, there is the introduction of the three-phase system. Our generation in a power plant is three-phase, transmission is also three-phase, even distribution is also in a three-phase system. But we use single phase in our domestic utilization, so that
single phase we get from the distribution transformer. You can see that in the distribution transformer you have a you will see the 3 terminal in the primary of the distribution transformer, while in secondary there are 4 terminals. That one extra terminal is work as a neutral point. So from the distribution transformer you get a single phase supply. Up to that distribution, up to the primary of that distribution transformer, the whole supply system is a 3-phase system. So all this part will be covered in unit 2nd. Now in a unit 3rd belongs to a transformer. As you can see that unit 3rd is totally cover the transformer, and transformer is a very useful device. Transformer make AC supply reliable to transmit from one place to the farthest place or the remote location. With the help of transformer we are having supply at appropriate voltage. So transformer, you will first of all you will learn about the what is magnetic material, what material are used in a transformer, what the core of transformer is made of by what material, and then some characteristic of that core as like BH characteristic, BH curve, and then you will study the working principle of transformer, of the ideal transformer, and then practical transformer. Then you will learn the equivalent circuit of a transformer, losses in a transformer. There are mainly 2 types of loss. One is iron loss, another one is a ohmic loss or the copper loss. And then regulation. The last topic of the transformer is auto transformer and 3-phase transformer. So you will have a complete knowledge of a transformer in this unit 3rd. So unit 3rd is totally dedicated to the transformer. So you will have some in-depth knowledge of the transformer in this unit. It's not an introductory. You will have some in-depth knowledge of the transformer in this unit 3rd. Now come to the unit 4th. In unit 4th totally deals with the this unit 4 totally deals with the machine. So so here you will study basically 4 types of machine. One is AC. First one is a DC machine. So DC machine means generator and motor both. So if somewhere is written machine, this will indicate motor as well as generator. So you will learn the working principle of motor and generator in this 4th unit, and working principle and construction of the motor and generator, then types of motor and generator, then EMF equation of generator. Here especially written generator. So the EMF equation of generator will be covered, and the torque equation of motor. So here machine is not used, motor word is used. So EMF equation of generator and the torque equation of the motor will be derived in this 4 unit, and then application of DC motor. So you can see that the motor you will only learn the basic principle, working principle, or the output of the machine. So output of the motor is actually the torque or the force or the speed you get, and the output of the generator is the EMF. So you are just studying the working principle, construction, and the output of the machine. In a 3-phase induction motor, next topic is the 3-phase induction motor. So 3-phase induction is a very useful motor. Almost 90% motor used in industry are the 3-phase induction motor. So one must have a knowledge of the about this motor. So you will cover the working principle of the 3-phase induction motor, and then construction. Its construction is very simple, working is also very simple, and then types. One is a slip type. There are basically 2 types of 3-phase induction motor. One is a
slip ring induction motor or the wound induction motor, and the second one is the cage rotor induction motor. So then one important characteristic of the induction motor is the slip torque characteristic. This is the very important characteristic of the three-phase induction motor, that is the slip torque characteristic. And then there is some simple numerical. So again, in this three-phase induction motor, because this motor is a very useful motor, as I have said that 90% motor used in industry are the three-phase induction motor. So here you are studying the principle, basic working principle, construction, and one important characteristic, that is the slip torque characteristic. So with the help of these 2 or 3 topics, you will have some knowledge about you will develop some common sense of the three-phase इंडक्शन मोटर एंड डीसी मशीन. जब भी आप कभी डीसी मशीन या इंडक्शन मोटर से इंटरेक्ट होंगे, तब आप समझ पाएंगे, कुछ आपके अंदर एक कॉमन सेंस होगा कि ये मोटर किस प्रिंसिपल पर काम कर रही होगी. इस वजह से यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है. द नेक्स्ट इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is used in a domestic use. Your fan is a single phase induction motor. Your a pump of water, submersible pump, or the whatever motor, almost every motor you use in a domestic purpose are of single phase induction motor. So you will learn here what is the working principle of single phase induction motor, working principle and operation of single phase induction motor, and the introduction to starting method. You will learn the starting, because single phase induction motor is not a self starting. Three phase induction motor is self starting. Self starting means when you switch on the motor get start and it start delivering its output, while single phase motor is not a self start. When you switch on the motor do not operate or do not work. You have to give external torque to the motor so that motor get start or start rotate in a particular direction. So single phase induction motor is not a self starting. So how you can make single phase induction motor self starting? That are the starting method. So there are many starting method. As we can see that in our house, the ceiling fan have condenser connected over the center part. So that condenser actually help this fan to operate or to make, is used to make it self start. When you switch on the motor with the help of that condenser, there this fan get its initial torque and it start rotating in particular direction. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं और मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये इससे कनेक्ट जो कंडेंसर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये उसकी हेल्प से हो रहा है. तो हम इसे देखेंगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाए और वो हम उसे डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ कर सकें. तो ये हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखेंगे. अब जो इसमें अगला टॉपिक कवर किया गया है वो है थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन. अब देखिए सिंक्रोनस मशीन शब्द यूज किया गया है, यानी पर यहाँ पर हम मोटर और जनरेटर दोनों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि मोटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और जनरेटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है. जनरेटर पावर प्लांट में यूज़ होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमें मिलती है जो पावर प्लांट में लगे हुए हैं वो सिंक्रोनस मशीन है, या उनको अल्टरनेटर भी बोलते हैं. सिंक्रोनस जनरेटर लगे हुए हैं वहाँ पर, तो हम उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे इंटरनली वो बने होते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. और सिंक्रोनस मोटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस के तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में वो लीडिंग पावर फैक्टर के साथ वर्क करती है, पर्टिकुलर सिचुएशन में लैगिंग पावर फैक्टर के साथ, तो वो हम देखेंगे कि वो क्या कंडीशन है, कैसे हम इसे एज ए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं. यूनिट 4th डील्स विद द some useful domestic
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे LT स्विच गियर जो हमारे घरों में लगे होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्यूज यूनिट होती है, MCB हो सकती है, ELCB हो सकती है। ELCB स्टैंड फॉर द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCCB मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर एंड there are some wire. तो what are the types of wire we use in a wiring, and then cables and the importance of earthing. We also use earthing in our house. So what is actually earthing, why we provide earthing, हम earthing क्यों देते हैं घरों में और उसकी क्या आवश्यकता होती है, कैसे अर्थिंग हमें शॉक लगने से बचाती है। तो ये हम इस पार्ट में 4th यूनिट में पढ़ेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ बैटरी। सो इन दिस वे दिस सिलेबस इज डिज़ाइंड। सो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 में हम स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज हो करके हमने पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें हमने पहले यूनिट में डीसी देखा, डीसी सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो हम कैसे सर्किट को एनालाइज करेंगे। देन हम एक स्टेप आगे आए, एसी सोर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। सिंगल फेज एसी सोर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको हम जब सर्किट में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा या हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हम सेकेंड यूनिट में कवर करेंगे। देन उसी के लास्ट पार्ट में हमने 3 फेज का भी इंट्रोडक्शन लिया कि जो पावर प्लांट में पावर सप्लाई जनरेट हो रही है वो 3 फेज पावर सप्लाई जनरेट हो रही है। तो 3 फेज एक्चुअल में क्या होता है, सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें 3 फेज सप्लाई मिलती है और वो क्यों हम 3 फेज जनरेट करते हैं, सिंगल ही फेज क्यों नहीं जनरेट करते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का हमें जवाब इस यूनिट में मिलेगा। और कैसे हमें सिंगल फेज सप्लाई मिलती है, क्योंकि जो जनरेशन होता है वो भी 3 फेज होता है, जो ट्रांसमिशन होता है वो भी 3 फेज होता है, इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी 3 फेज होता है। तो हमें सिंगल फेज कैसे मिलती है सप्लाई, कहाँ से कन्वर्जन होता है, वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। देन थर्ड हमने देखा ट्रांसफार्मर से है, तो उसमें पूरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसने पावर सप्लाई को रिलायबल बनाया है, जिसने पावर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने लायक बनाया है, वो है ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी इफ़िशियंसी इतनी हाई होती है, क्यों ये इतना यूज़फुल बन पाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यानी लेबोरेटरी में जो यूज़ करते हैं हम वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या वर्किंग है। एंड देन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, अक्सर ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते समय यूज़ किया होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। और देन 3 फेज ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के चारों ओर लगे हुए हैं, जो लोकेलिटीज़ में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। और चौथी यूनिट पूरी मशीन पर बेस्ड है, मशीन के बारे में हम समझेंगे। मशीन आपके लिए बिल्कुल नई होगी, जो अभी इंटरमीडिएट पास करके आए हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मशीन में आप देखेंगे कैसे आप किसी एक स्टेशनरी पार्ट को कैसे रोटेट कर पा रहे हैं। तो इस बहुत ही अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए, समझ पाए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए। लास्ट टॉपिक इज़ अ वेरी इंटरेक्टिव टॉपिक। इंटरेक्टिव इस वजह से है क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं आप इससे अपने घर में देखते होंगे, डेली देखते होंगे, आप फ्यूज देखते होंगे, आप MCB देखते होंगे, आप अर्थिंग समझते होंगे कि अर्थिंग वायर घर में दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाता है, बैटरी क्या होती है, तो आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर यूज़ कर पाएंगे। तो इस वजह से ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। जब हम आगे अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो ये टॉपिक और थोड़ा इन डेप्थ होते जाते हैं, यही टॉपिक यही रहेंगे लेकिन हम इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। केवल एक मेजर पार्ट इसमें रह गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो अनटच्ड है, वो है पावर सिस्टम का। तो वो बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है, वो पहले इस सिलेबस में था, उसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन वो हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, इस वजह से इसको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। सो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है। अब हम अगले वीडियो में आपसे DC सर्किट के साथ मिलेंगे, DC सर्किट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए